Hello and welcome to N6 TV Canada. You're watching us live on N6 TV, N6 Facebook, and N6 YouTube page. You're watching Match Point with your host Hamza Elahi, and with me is my sports analyst Dr. Adnan Khan and sportscaster from Toronto, Gurpreet Purbaji. Welcome to the show, gentlemen. Let's move towards our headlines for today. In today's headlines from the Cricket World Cup, Australia with another thriller, a thriller after the Pakistan South Africa, which went to the last hour, and this uh, thriller between Australia and New Zealand went to the last hour, and New Zealand could not make it. Australia is now an unstoppable beast, which has made its mark, and हमारे स्पोर्ट्स कास्टर जी गुरप्रीत पुरबा का फेवरेट बैट्समैन ट्रेविस हेड भी वापस शामिल हुआ है उसके बारे में गुरप्रीत जी से पूछेंगे और उसके अलावा एंड हैप्पी न्यूज़ एज आई सेड we are supporting, at least I was supporting Netherlands and I was cheering for them. So Netherlands have comprehensively beaten Bangladesh. I mean, Bangladesh was, I mean, out in all department. They could not even went to 150, where Netherlands were above 200. So a comprehensive defeat in all three categories from them. Let's move towards Dr. Adnan and see what he has to say about headlines and if she's sharing any others. Ji, thank you, Hamza, and welcome, Hamza, and welcome, Gurpreet ji, to the match point. So, 2 days and two thrillers, two classics. First match to be decided in the last over of the World Cup 2023, and that was Australia versus New Zealand, the arch rivals of the Oceania zone. South Africa won by just one wicket a day before, and Australia winning by just 5 runs. So, World Cup is peaking at a right time, and we are in for a treat. World Cup at its best. Australia became the first team to play the 100 matches in the World Cup history. The five-time champions Australia, the champions of 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 have marked their 100 appearance. Finally, New Zealand at the 95 next, if they go to the all games, might be until final. If they go, they may check this mark of 100. Otherwise, no other team is nearer to the 100 mark. For your interest, India is at 89 and Pakistan at 85 to reach the 100 mark at the World Cup appearance. Bangladesh team has now lost to the four non-test playing nations. First of all, to the Canada 2003, then to the Kenya in 2003, Ireland 2007, and then Netherlands 2023. पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज रीच्ड कोलकाता कलकत्ता के स्टेडियम में वहां पर पाकिस्तान टीम पहुंच गई है फर्स्ट प्रैक्टिस session scheduled to be there at the Eden Gardens on 30th of October, and the next match of Pakistan, all of you are knowing, is against the Bangladesh on 31st of October. जहां पर वर्ल्ड कप चल रहा है और जहां पर टीमें मिल के 700 स्कोर लगा रही हैं, तो वहां पर एक बड़ी हेडलाइन आ रही है कि जिसपे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी बैटर स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन इन दिस वर्ल्ड कप 2023. साउथ शकील इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 104.27 और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम लोएस्ट पीक के ऊपर वर्सेस स्पेन at 63.48. A little concern for Pakistan, क्योंकि हॉलैंड की टीम का आपको आज मैं जब प्रोग्राम आगे चलेगा तो बताऊंगा कि उनका स्पिन के अगेंस्ट क्या रेशियो है, डलीडा का, उनके कप्तान एडवर्ड्स का. दैट्स व्हाई इसको हेडलाइन में शामिल किया गया है. England's the defending champions, their current win percentage in this World Cup is 20, their lowest in any edition of the World Cup or any edition of the Champions Trophy. 3 of the 4 worst campaigns ever they have come in the subcontinent before, in the 1987, then they came in the 1996, but this is the worst ever. In the first one, they reached to the grand finale in the Calcutta. Second one, they reached in the Faisalabad Iqbal Stadium to meet the Jaisuriya Sri Lanka in the quarterfinals. They lost over there, and now
I don't know that what is their fate. Obviously, they are not going to the last four, but until now, there's a horrible story. So the last headline: Australia have smashed 350 plus score for three consecutive times in the ODI history, and they are well and back in the World Cup. No other team in the history of cricket has struck the 350 plus three scores consecutively ever in the history of the game. And their hero and Maxi Mania, Maxwell has hit the biggest six of the World Cup 2023. That was 104 meter. 104 meter is the longest six of the 2023 World Cup. And then they're better. The next headline is also from Australia. Travis Head, who was out for 6 weeks, came back into the side with a lot of struggle. And soon after coming, he smashed 109 runs from 67 balls. What a knock! Head has been arrived in style in the Cricket World Cup 2023. 100 on the World Cup debut. Take a bow. Over to you, Hamza, if any other headlines. Rajan Nairji has joined us from Mumbai, India. He's the ex media manager for Team India. He just got offline, but he has just joined us. I'll move over to Gurpreet. Gurpreet has some sports headlines from today. Gurpreet ji. Thank you, Dr. Adnan, and welcome to all our viewers. I will be going a little bit away from cricket to cover a very good story because South Africa became the first team in the history of rugby to win back-to-back World Cup. They beat New Zealand 12-11 in a nail biter, in a cliffhanger, and they became champion one more time. So, congratulations, South African fans. In rugby, they are a force to reckon with, along with the Black Caps, the New Zealand. So, congratulations to all fans globally for South Africa. That was my headline, Hamza. In our post match, we're going to cover the first one, which is Australia versus New Zealand, a big takra, a big rivalry in the other part of the world. Australia's and New Zealand's, they always come in between. Australia had an upper hand by the end of the last hour, and comprehensively not, but was a very thrilling match, not a comprehensive win. The both team was tied and up to the last mark, and in the end, it have had the Australian team. And your take on it, Dr. Nan? Hamza, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि there was a run fest at Dharamshala. Australia won by 5 runs and the smallest margin of defeat when a team posted 350 plus target in the Cricket World Cup match. क्योंकि इससे पहले शॉर्टेस्ट मार्जिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 रन से बेशुमार टीमें हारी हैं। टीम इंडिया ने 2 दफा कंसेक्टिवली 1987 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर 1992 में ये अनवांटेड कारनामा सर अंजाम दिया था। लेकिन एक टीम ने जब 350 प्लस का टोटल लगा दिया हो तो उसके बाद जो क्लोजेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो यही 5 रन है। डेविड वार्नर और हेड they have smashed at least one boundary in each of the 13 overs. और ये मैं कहता हूं कि बड़ा एक लेसन है सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए। मैं इसमें से इंडिया को हटा रहा हूं, माफ कीजिएगा, सब कॉन्टिनेंट टीम्स में इसमें बाकी टीमों की तरफ मैं तवज्जो देना चाह रहा हूं कि हर ओवर के अंदर बाउंड्री थी, रोटेट स्ट्राइक रोटेट हो रहा था और सिंगल्स पे तवज्जो थी। हालांकि आपको पता है कि डेविड वार्नर को सिंगल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह वो टॉय कर रहे थे बॉलिंग को, ट्रेंट बोल्ट की और हेनरी की, कि जिस तरह स्कूल के बच्चे या कोई मोहल्ले की टीम खेल रही है। ही वाज टॉयिंग अराउंड द न्यूजीलैंड बॉलर जो इतनी टॉप फॉर्म के अंदर हैं और इन द रन ऑफ अ लीडिंग विकेट टेकर उनके बॉलर्स आए हुए हैं। वो उस टीम के साथ आपने देखा कि किस तरह से ट्रेविस हेड, मुझे किसी लम्हे भी नहीं लगा कि धर्मशाला की विकेट पे उनको कोई दिक्कत आ रही है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो मोस्ट रन्स इन द 10 ओवर्स इन द ओडीआई, उसमें अब ये जो रिकॉर्ड है
ये 118 रन्स का बना धर्मशाला में, जो पहले 10 ओवर्स में बनाया। आई थिंक डेविड वार्नर वाज अनअवेयर एज अ वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, क्योंकि वर्ल्ड कप रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज वर्सेस कनाडा सेंचुरियन का मैदान था, 2003 का वर्ल्ड कप था, और वहां पर 119 रन्स बने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेविड वार्नर जो पहले 10 ओवर का जो आखिरी बॉल था वो डॉट बॉल खेल गए। आई थिंक उनको मालूम नहीं था कि दिस इज अ रिकॉर्ड गोइंग टू बी ब्रोकन इफ ही हिट द सिंगल और द फोर और द डबल। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं वर्ल्ड कप से हट के पहले 10 ओवर्स के अंदर मैक्सिमम रन्स का, तो वो रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज का नहीं है बल्कि श्रीलंका की टीम का है, जो इंग्लिस्तान के खिलाफ लीड्स में 2006 में 133 रन बनाए थे। अप टू द डेट पहले 10 ओवर्स के अंदर श्रीलंका का जो ये रिकॉर्ड है 133 का, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स in the in any game in the ODI overall World Cup, Champions Trophy, ICC tournament or the normal match. David Warner बड़ा खूब खेले, dominating the World Cup at the age of 37. जितने भी बाबे इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, उस दिन भी बात की थी रोको की, कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या डेविड वार्नर, इनको देखिए कि परसिस्टेंटली ये 30 प्लस एज में परफॉर्म कर रहे हैं, और इनकी एनर्जी देखें कि जब वो 100 लगाने के बाद या 50 लगाने के बाद जो हवा में जंप करते हैं, एक लीप लेते हैं, तो क्या स्टाइल होता है इनका। ही मेड 163 वर्सेस पाकिस्तान, 104 वर्सेस नीदरलैंड्स एंड नाउ 81 वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़े अनलकी रहे कि धर्मशाला में अपनी सेंचुरी ना बना सके। और ये बता दूं आपको कि 118 पे 0 थे 10 ओवर्स के बाद में, और दिस इज द सेकंड फास्टेस्ट टीम 100 इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और व्हाट अ रिटर्न बाय द ट्रेविस हेड, जितनी भी तारीफ करूं उसकी कम है। और ट्रेविस हेड, मुझे इस तरह लग रहा था कि जिस तरह इंजरी से पहले जहां उन्होंने खत्म किया था वो जो टेस्ट मैच में जहां वो खेले थे, तो मुझे लगा कि सो के उठे हैं इंजरी के बाद और वहीं से दोबारा शुरू कर दिए। एक होता है ना, बंदा को गार्ड लेता है, कोई देखता है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू द बॉलर, वो जहां खत्म हुए वहीं उन्होंने शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का मैं स्ट्राइक रेट आपको बताना चाहूंगा 115.41, ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है ओडीआई हिस्ट्री में ओपनिंग बैटर का इस वक्त अप टू द डेट। और सेंचुरी ऑफ द 59 बॉल्स रिटर्निंग फ्रॉम द इंजरी, तो मुझे लगता है कि ये कोई ड्रीम इनिंग्स थी, या उन्होंने कोई कैप पहना हुआ था किसी और का, या कोई सुपर ह्यूमन कोई चीज थी। इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। जी हम साहब। Radhanan, and I'm very happy. Welcome, Rajan sir. How are you? I'm very happy that Australia has finally come to the party, and I was waiting for this moment. Even though they have won by 5 runs, I still see there are lots of chinks in their bowling attack. When you have 388 on the board and you let the other team score and almost win, that tells me that their bowling is weak. And the second weak link is in their batting, which is their middle order. The start they got 158 for no loss in 15 overs. There is no doubt in my mind they should have scored 450. But Marnus Labuschagne and Steve Smith is a duplicate copy or photocopy of Pakistan middle order, which is their captain and vice captain. So until and unless Australia improves on these things, which is their fast bowling, their spin bowling, we already know it's weak. There is only Adam Zampa. But if Australia does not improve on their middle order, they must bring in Stoinis. I don't know what is the think tank thinking that they have 5 bowlers. Stoinis not only gives them the bowling option, he is very good power hitter, and which Marnus Labuschagne nor Steve Smith can do. But I am only happy for my favorite player in Australian team for last 2 years, which is Travis Head. He is back, not only back, he is back with a bang. And when he comes back, he gives them the opportunity to play Stoinis, which I believe from now onwards will be part of this playing 11. And we can see that Australia will have their strongest playing 11 moving forward. जी, मैं रजन जी पे हम जाना चाहेंगे, लेकिन रजन जी से जस्ट पहले मैं एक छोटा-सा एक बात ऐड करना चाहता हूँ। गुरप्रीत जी ने बात की, तो मैं वहाँ मुकम्मल कर दूँ कि वो 13th ओवर तक आपको मैंने स्टोरी बताई। आगे से गुरप्रीत जी ने बताया, 14th ओवर वाज़ द फर्स्ट ओवर जहाँ पर बाउंड्री नहीं लगी थी।
उससे पहले हर ओवर में बाउंड्री लगी थी और उससे पहले स्ट्राइक रेट 125 तक भी पीक कर रहा था, फिर 119 113 एवरेजली रह रहा था। जो ही लबुशैन आए और जो ही स्मिथ आए, दे प्लेड 37 डॉट बॉल्स और उसके बाद स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 70। और मैंने सुना कि मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन, वो भी एक टीवी चैनल पे बैठे तनकीद कर रहे थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया स्मिथ पे और लबुशैन पे, और उन्होंने कहा कि बाकी बैटर्स जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की तरह दे आर प्लेइंग द क्रिकेट ऑफ द 80s। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन में अपने आगे चलना है और नॉकआउट स्टेज तक जाना है तो इन दोनों को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना होगी। जी हमजा। मैं कुछ आपको परसों के दिन बातचीत किया था मैंने कि एंकर रोल जो प्ले करना पड़ता है, आप चाहे मॉडर्न क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, T20 क्रिकेट खेले, स्लैम बैंग वैंग बैंग क्रिकेट इज गुड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। बट जब टीम हारती है तो कोई कुछ कारण से सब कुछ क्रिटिसाइज करने लगता है। बॉटम लाइन, टीम हैज वन इन ए फोटो फिनिश। Now, as far as Steve Smith and Labuschagne, you cannot expect both of them to bat either like David Warner or Head or Maxi. They have a clear pattern. Can I understand that Pakistan has lost matches? They have not won matches. And their middle order has crumbled. But Australian batting, even though their middle order is slightly delicate, yet they are winning matches. What is that we are trying to say? Do you think that by just slam bang cricket we will win matches? No. This has been proved by the approach of the Pakistan batting, where such a wonderful team, all Babar had to do was to stay put. And even though if you see Steve Smith and Labuschagne 18 each, but playing a few dot balls here and there, people like Maxi and Iglis has made more than made up for their slowness. It is not that 388 is a wonderful score. With reference to bowling, I would not go to the extent of calling it a weak bowling side. Look at the way Stark pulled out a rabbit out of the box, and what an over he bowled in the last. Look at their fielding. Labuschagne not only stopped two boundaries, but also inflicted a brilliant run out. Did Pakistan do this? How can we compare? And they have won 5 World Cups. We have won only one, that too under the great ability of Mr. Imran Khan and Wasim. So please, my personal opinion is I will not compare Pakistan batting with Australian batting and middle order. Last but not the least, Australia is an all round team. They plan very well. Did anybody think in the wildest dream that Travis Head will come back, smash everybody? Did you watch Mitchell Marsh getting anything? So do you think 3 batsmen will fail consistently in each and every game? One good innings from any of these people will take the score, as Gurpreet said, more than 400 plus. So let us keep our fingers crossed. And my aim is that Australia on a given day, you can't expect all the batsmen to score runs all the time. There will be a failure for David Warner. Does it? Then what happens? Then either or Steve Smith or Labuschagne will have to anchor the innings. How many teams anchor it? Virat Kohli, everybody talks of Virat Kohli these days because he is among the runs. Look at his starting. In each and every match, he has started comfortably in a soft manner till he is 20. Once he is 20, he starts accelerating. And then he scores runs. Unfortunately, both Steve Smith and Labuschagne, last match also 30 plus, or one he got out for a zero. So these are part and parcel of the game. And one has to understand that bowling on these wickets is treacherous. And I was so happy to hear yesterday at some media that all the bowlers are going to form a union and going to say that they are not interested anymore in playing on these type of pitches. And I support them. What are we doing? Are we trying to entertain people with killing the bowlers?
They run so much, they work so much, and bowling, what is happening? There is no penetration. You are tailor-made batting pitches to entertain. Exactly. But then give them a 50-50 pitch and let us see who is the world's best batsman, who is the world's best bowler. This is my take on that, please. है कि जहां पर हम सब ने बात कर ली ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर की, ऑस्ट्रेलिया के पैथेटिक मिडिल ऑर्डर की, तो थोड़ी सी तारीफ करना होगी ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर की। पैट कमिंग्स, द मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 264 स्ट्राइक रेट, और इनका मैं 264 स्ट्राइक रेट, एंड ही टुक जिमी नेशम लाइक एनीथिंग। एक ओवर में जो उन्होंने 23-24 रन बनाए और उनको जो 4 छक्के लगाए, वो कहते हैं ना, एक जमाने में वसीम कहा करते थे कि यार उतनी मार हम खाते थे कि जितने रन बना सके उतने लीक करने हैं। तो उन्होंने उतने ही रन लीक किए जिमी नेशम ने कि जितने उनको पता था कि मैं बना सकता हूँ। एनी हाउ जी, बड़ी जबरदस्त हिटिंग की उन्होंने। पैट कमिंग्स ने हाईएस्ट एग्रीगेट इन द ओडीआई मैच में। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो गेम थी 2009 में, वो 872 का एग्रीगेट था। ये एग्रीगेट भी हो जाता, 400 तक चला जाता, अगर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता और वो थोड़ा स्लगिश ना होता। तो अब ये जो मैच हुआ है धर्मशाला का मैच, इसका 771 रन हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गेम में लगे। ये ओवरऑल रिकॉर्ड तो बेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक सेंचुरियन का वो बेस्ट है 872, लेकिन 771 का जो मजमूआ है, ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का और वर्ल्ड कप के रेशो के अंदर हाईएस्ट एवर एग्रीगेट है किसी दो टीमों का जो एक के मध्य मुकाबिल हो। लेकिन आप शायद जानना चाहते हो कि इससे पहले बिगेस्ट क्या था, तो इससे जो पिछला हाईएस्ट था दैट वाज 754। वहां पर साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व था वर्सेस श्रीलंका, और मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका में होम ग्राउंड में उनके 7 अक्टूबर 2000, माफ कीजिएगा, अभी जो रीसेंट मैच है साउथ अफ्रीका श्रीलंका का, वो 7 अक्टूबर 2023 को। जो मैच डरबन में खेला गया था साउथ अफ्रीका श्रीलंका का, वो भी हाईएस्ट एग्रीगेट था, लेकिन वो सेकंड हाईएस्ट नहीं था। तो सेकंड हाईएस्ट इज 754। अच्छा, जहां पर अब मैं बताऊं आपको कि ऐसे टोटल जहां पर टीम ऑल आउट हो गई हो, तो उसमें हाईएस्ट अभी तक वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड 2019, 389 इज द हाईएस्ट, और उसके बाद सेकंड जो है वो 388 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पर एक टीम ऑल आउट भी हुई हो और स्कोर भी बना हो। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज अपनी इनिंग्स में, इवन के इनिंग्स थोड़ी स्लो हुई, 20 छक्के लगे, 20 सिक्सेस के बाद मोस्ट सिक्सेस बाय अ टीम इन अ वर्ल्ड कप गेम। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 छक्कों के साथ सेकंड नंबर पे पहुंच गई है। पहला नंबर इंग्लिस्तान की टीम है, उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स में 25 छक्के लगाए थे, जो अभी तक रिटेन्ड है रिकॉर्ड और इंटैक्ट है, टूटा नहीं है। थोड़ी सी अब बात करते हैं जी न्यूजीलैंड की तरफ, फिर शामिल करते हैं अपने बाकी कंटेस्टेंट्स को भी इसमें, जो बता सके न्यूजीलैंड के चेस के बारे में। एक हैरान कुन चेस, क्योंकि आम हालात में जब इतना चेस टीम इतना टोटल देखती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका की टीम हो या कोई और टीम हो, वो ये टोटल देख के घबरा जाते हैं। चाहे पाकिस्तान की टीम हो, खैर पाकिस्तान तो 200 रन का टोटल भी देख के घबरा जाता है, लेकिन एनी हो, व्हाट अ चेस बाय न्यूजीलैंड, लूजिंग बाय लेस देन 10 रन्स व्हाइल चेजिंग 350 प्लस टारगेट्स इन द ओडीआई। जो सबसे शॉर्टेस्ट मार्जिन है इसके अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड आज 5 रन से हारा। जो 350 प्लस को चेस करते हुए जो शॉर्टेस्ट मार्जिन है, दैट वाज द आयरलैंड मार्जिन। आयरलैंड 2002 में 361 रन चेस कर रहा था न्यूजीलैंड के, और वहां पर वो 1 रन से शिकस्त खा बैठे थे। बहुत ही हैरत अंगेज मैच था वो, इंटैक्ट है वो रिकॉर्ड अभी तक। और उसके बाद श्रीलंका इंडिया के हाथों 2009 में 415 रन चेस कर रहा था, और वहां पर 3 रन से शिकस्त खा गया था। और उसके बाद इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में ही 3 रन से हारी थी, 351 रन चेस करते हुए। हैरत अंगेज तौर पे ऐसे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है कि जो इंडिया से आर्च राइवल से 2004 में हारे थे, और मैं उसका आई विटनेस था उस गेम का। उसमें पाकिस्तान की टीम 350 रन चेज कर रही थी, इंजमाम उस टीम को लीड कर रहे थे, और 5 रन से टीम पाकिस्तान
शिकस्त खा गई थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप के अंदर ये शॉर्टेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री है कि जो आज ऑस्ट्रेलिया ने लिया। और मल्टीपल हंड्रेड्स अगर मैं बात करूं, while chasing in the World Cup edition, रोहित शर्मा अभी भी रिकॉर्ड उनका इंटैक्ट है। 300 हैं 2019 में चेजिंग के दौरान। ये बता रहा हूं आपको, सिर्फ वर्ल्ड कप एडिशन की बात हो रही है। और अब आज रविंद्रा ने जब आज सेंचुरी बनाई, तो उनकी 2 सेंचुरियां जो है वो शकीब, जो रूट और संगाकारा को बराबर कर गए हैं एज अ वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के लिए। अगर यहीं पर रविंद्रा एक और सेंचुरी बनाती है तो वो रोहित शर्मा की हम असली करेंगे। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स जिन्होंने स्कोर की हैं 2 सेंचुरी इन अ वर्ल्ड कप एडिशन एट द एज लेस देन 24, 24 साल से कम उम्र लड़के जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 2 सेंचुरियां चेज की हों और बनाई हों। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनका ताल्लुक भारत से है, 1996 के विल्स वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा था, वो दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने ऐसी 2 सेंचुरियां की। और उसके बाद रचिन रविंद्रा अब 2023 में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और अगर आप ये बात करें कि प्लेयर्स टू स्कोर 400 प्लस रन्स इन अ वर्ल्ड कप सिंगल एडिशन एट द एज ऑफ 23 और लेस, इसके अंदर भी सचिन का नाम है और रविंद्रा का नाम है। रविंद्रा की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। 123 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड, 116 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 75 इंडिया के खिलाफ और 51 नीदरलैंड के खिलाफ। जस्ट 23 इनकी उम्र है और 250 200 6 इनिंग्स वर्ल्ड कप के अंदर, एब्सोल्युटली मार्वलस। जी। would like to come back to the point जो राजन साहब कर रहे थे कि why I said Australian bowling looks weak. Let me go back a little bit. Australia versus South Africa series. 5 matches, 4 times more than 300 score against Australia. India versus Australia series, India scored 399 against Australia. This World Cup, even though New Zealand lost, they scored 383, and also South Africa scored 311 against Australia. And the second point I want to highlight, which I brought, I know Steve Smith and Marnus Labuschagne, they anchor their inning, but I still believe when it comes to semi-final or knockout game, you do not need two of them. When you play both of them, you are unable to play Green or Stoinis in the playing 11. Guess what? If any of their bowlers have a bad day, who will bowl? So you need sixth and seventh option. That's all my point was. I'm not saying Australia is going to lose easily or Australian bowling attack is very weak, but I see there are lots of chinks in their bowling attack. Mitchell Stark is not bowling the way we have seen him. Pat Cummins is down. His bowling is not up to what we have seen as a captain. And Hazelwood is not as penetrative as far as now until these 5 6 matches that he has played. And coming back to last point, Rachin Ravindra is going to be a superstar. The way I have seen him, the way he is playing, I think what Shubman Gill is to India, Rachin Ravindra is going to be for New Zealand. That's what I want to add. Absolutely, he is originally from Bangalore, Ravindra. Yeah. His parents moved away to New Zealand. And let me tell you, he comes very often and plays in Indian conditions. So he is well conversant with a lot of things. But he is a huge potential, not only potential, but if you compare him with any of the other youngsters, there are people who may be good. रचिन रविंद्रा इज व्हाट अ वंडरफुल बैट्समैन। गेम अवेयरनेस उनके पास है, ही इज रिएक्टिंग टू एवरी बॉल। आज जो उन्होंने, जो मुझे बड़ी स्पेशल बात लगी कि जब वो 94 के ऊपर थे, 94 के ऊपर, बड़ी हिम्मत है। आपको पता है कि डेविड वार्नर भी जब अपनी 100 के पास होते हैं तो वो बॉल जाया करते हैं। तो उन्होंने मिड के ऊपर से जब छक्का मारा और चांस लिया, तो दैट वाज अ ग्रेट टू सी द 100 आफ्टर 94। तो इस टाइम के ऊपर रचन का कॉन्फिडेंस, आई थिंक रजन जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी। It is a joy, pleasure to watch any youngster who is not only making his debut in the World Cup, but also truly realizing his potential. I can tell you 5 names in different teams who are great potential, but have they delivered?
So easy to say he has the potential, he has the potential, but has he transformed it into the match scenario? That's where I always say, even as a bowler, if you look back, Sri Lankan bowling, can you say that any bowler is of any super class? But yet they are giving you results. Third and last, pace bowlers are not understanding one thing, they are not willing to bowl Yorkers in our conditions. That's where I was very upset that Pakistani bowlers tried short pitch ball. Are they trying to scare? Nobody is bothered about 154, 156, or 160. That may be good enough for a 20 over match. But now, 154 yesterday, Nisham hit. Likewise, the Australian batsman also hit 154 ball. So one has to understand potential realization, one, two, consistency, three, the way you are taking the match by match, and different matches have different approach. And one point which is one of the major factor, which I said in one of the other interviews recently, was when the World Cup started, teams which have started slowly are blossoming as the tournament goes towards the end. People have dropped players on purpose because they want the player to get rest. Can Stark consistently bowl 10 overs every match? Never, because of the heat in India. But unfortunately, he has to deliver. And yesterday, if you watch very closely, Hazelwood was hit in the last over for a 4 and a 6. You remember it? And yet, the last two balls, he jammed Nisham and did not give a single, wherein he could not take the strike. And when Stark came back, he could bowl to a fresh bolt and he considered 5 wides. In spite of that, you see Laboshek, how he fielded. I'm not trying to convince anything. What I'm trying to say, the willingness to win matches by hook or crook is far more important than telling that we are having potential. Now, fast bowler Wasim Jr. bowled brilliantly. Even though I also said that Mr. Mir should be playing. He was not being considered. But in totality, you see, Mir is potentially a very good bowler. And mark my words very carefully, if he is handled properly, he will give you better results than. जी बिल्कुल जी, रजन जी का लगता है राब्ता फिर मुनक़ता हो गया है। बात हो रही थी न्यूजीलैंड बैटिंग की और उसके बाद डैरेन मिचेल बड़ा ज़बरदस्त खेले, फैंटास्टिक खेले। ही इज़ स्पेशल अगेंस्ट स्पिनर्स, ही डिस्ट्रॉयड द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। डैरेन मिचेल जिस तरह खेलते हैं, तो मुझे रश्क आ रहा था कि खेलना चलो मैं इंडियन प्लेयर्स की यहाँ नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को और श्रीलंकन प्लेयर्स को खेलना चाहिए या अप टू द पोटेंशियल अगेंस्ट स्पिनर्स। लेकिन डैरेन मिचेल की जो इनिंग्स थी, दैट वाज़ that put me in a surprise. देखिए वो consistently spin के against अच्छा खेल रहे हैं. This is the art. If you are coming to the subcontinent and living up to the reputation to play against spin, you are an asset for a team. लेकिन अब बताएंगे उसका क्या करें कि जो टीम ही सबकॉन्टिनेंट में हो और सबकॉन्टिनेंट में स्पिन को खेलने से कासिर हो या प्रॉब्लम आ रहा हो, एनी हो। जिमी नेशम की बात की थी कि ही कंसीडर्ड 4 सिक्सेस इन द 48th ओवर ऑफ हिज बॉलिंग। तो उन्होंने उसको बड़ा अच्छा कंपेंसेट किया अपने बैट के साथ। और जिस तरह की बात की रजन जी ने या गुरप्रीत जी ने बताया था कि लबूशैन ने बाउंड्रीज भी सेव की और बड़ी जबरदस्त बाउंड्री सेव की। अगर वो बाउंड्री सेव ना करते तो यकीन करें कि इट वुड हैव कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया द मैच एंड इट वुड हैव कॉस्ट पाकिस्तान देयर वर्ल्ड रिकॉर्ड द चेज दे मेड अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये दोनों चीजें टूट जानी थी। तो 2 गेम चेंजिंग मोमेंट्स आए थे फाइनल ओवर में जब नेशम रन आउट हो गए। अ सैड एंड टू द ग्रेट नॉक, 58 रन्स, 39 बॉल्स and one to remember for the long time for the World Cup knock जो उन्होंने खेला। और एक बात आपने नोट की कि नहीं की कि देखें इनकी कमिटमेंट्स देखें कीवीज की कि हमारे प्लेयर्स जब सब कॉन्टिनेंट के 50 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, तो किस तरह वो खुशी से दीवाने होते हैं या जेस्चर्स भी देते हैं। अमूमन उनको मालूम ही नहीं हुआ कि 50 हुई कब। ही डिडंट सेलिब्रेट फॉर हिज 50। एक होता है ना टनल विजन
वी वाज फोकस्ड ऑन द विक्ट्री. उनको सिर्फ न्यूजीलैंड की जीत नजर आ रही थी, वो और कहीं नहीं देख रहे थे. ही इज स्पेशलाइज्ड, ही इज बीन कस्टम टू डू दैट व्हेन ही कम्स इन द टेल. जो काम लांस क्लूजर किया करते थे, बेवन किया करते थे, तो ही हैज कस्टमाइज्ड हिज इनिंग्स कि उसको एंड पे लेके जाना है. बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, अगर वो हिट लग जाती. और वो गैप तलाश कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो क्रॉस नहीं कर सके. एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर द न्यूजीलैंड इनिंग्स एट द एंड एंड द जिमी नेशम फेलियर टू follow the game and to the victory for the New Zealand? Ji Gurpreet ji. Gee, just simply superb. They chased it the way it should have been chased. There was system. They did not lose heart at any moment, although they lost by 5 runs. But what a fight! When the task is so daunting, 388. Usually teams either get out at 250 or 150, but they had a system. And Rachin Ravindra, he's a superstar in the making. उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है. And some words of wisdom from Kane Williamson. It was wonderful for a gentleman of his caliber to bringing in the water in last moments and telling his teammates what we need to do. And this is for other teams to learn. अपने जहाँ पे ये culture जो बहुत बड़ा होता है, you will rarely see a बिल्कुल captain सही कह रहे हैं आप. going on with the water. So this is what was the moment for me, that Kane Williamson going on and telling Jimmy Neesham exactly what needs to be done. Last thing I could add, I think somehow there was little bit miscalculation by Jimmy Neesham when he missed 4 or 5 balls where he should not have take single. Will that make a difference in the final standing? Only time could tell. But I think he made a little bit of mistake when he gave a strike to Bolt twice, and Bolt missed 2 balls twice. So you lost 4 balls over there. Otherwise, this could have been chased. But hats off to New Zealand for the way they played. रजन जी बड़ा क्विक 30 सेकंड्स में आप बता सकें हमें, जिमी नेशम का और जो न्यूजीलैंड का एंड था, इसको कंपाइल करें 30-40 सेकंड्स में. Outstanding effort, no doubt about New Zealand's brilliant fight back. Last but not the least, I am reminded of Jonty Rhodes once on his own getting a victory through his brilliant fielding. Similarly, I would give the man of the match special award to Labuschagne to save Australia from the blushes of defeat and New Zealand's great wholehearted chase for a brilliant end to a great match, the best of the World Cup. जी हमजा, over to the studios. The match has been finished. Now we'll move towards the second match, Bangladesh versus Netherlands in Eden Gardens. And what a match it was. I was fully supporting Netherlands. I am still supporting Netherlands. What a beautiful team which came into the World Cup and giving um, good matches, a good form. They have moved up to the 8th position, and Bangladesh and England is on number 9 and 10. अब हम उस मैच की भी थोड़ी चर्चा करते चलें. They made it. They made it. हमने सबने कल बांग्लादेश को किया था मेरे अलावा. So keep that in mind. My prediction came right on top. You बांग्लादेश का नाम नहीं लिया था. आप याद करके देखिए कि मैंने क्या बताया था आपको कल के बारे में. I As a said I matter will of love to do. जी. As a matter of fact, I think nobody picked any team. I think we finished up. Let's hope a best team wins, and we left it. It was a very short and sweet coverage about this match. But hats off to Netherlands. They have not just came here to participate. They have already won 2 games. They are on 8th position. And what a defense! Even though the score wasn't that daunting or anything, but they are very laborious, they are very meticulous when it comes to they play within their limits. There is no hanky panky stuff. They just know, okay, it's like a test match bowling, length bowling, no width, no nothing. And just to cap fielding, just like Labuschagne did their whole match, they gave 110%. Usually, hardworking people, they achieve more in their life, even if they have little bit lesser skill, but they compensate it with their hard work. And that's what Netherlands is doing in this World Cup.
बिल्कुल जी, गुरप्रीत जी के जो लफ्ज़ थे बड़े इम्पोर्टेंट थे, हार्ड वर्क, वो फ़ोकस थे, हार्ड वर्क, तो डच आर फ़ोकस्ड ऑन द हार्ड वर्क। उनके अगर मुल्क में जाएँ आप, उनकी ज़िंदगी देखें, तो जिस तरह से वो एम्स्टर्डम या उसके नवाई इलाकों में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, तो एक हार्ड वर्किंग नेशन है ये। और बड़े अपने काम से काम रखते हैं, इनका भी टनल विज़न होता है, टनल विज़न में काम करते हैं, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं आजू-बाजू की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बड़ा ज़बरदस्त खेले वैन मीकरन, आई थिंक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, तो इन्होंने 7.1 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, जिन्होंने 4 विकेटें ली हैं। देखें कितना अच्छा स्पेल है, एक टेस्ट नेशन के अगेंस्ट 7 ओवर में 24 रन्स देना। और ये भी बता दूँ आपको इनके बारे में, जिस तरह हार्ड वर्क की बात हुई, कि नवंबर 2020 में कोविड के जो बाद का टाइम है, पॉल वॉन मीकरेन वाज़ डिलिवरिंग द उबर ईट्स। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये उबर की डिलीवरियाँ करते थे और अपनी गुजर-बसर करते थे कोविड टाइम्स के बाद, और फिर 2021 तक भी ये करते रहे। अक्टूबर 2023 में पॉल वॉन मीकरन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता था वर्ल्ड कप के लिए भी। एंड देन ही हैज रिटन वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी इन द वर्ल्ड कप, जो अभी जिस तरह उनकी टीम ने किया, दो हैरत अंगेज शिकस्त। और बड़ा देखें, छोटे छोटे बंच हैं पर जेल हुए हुए हैं एक दूसरे से। और सबसे जो बड़ी बात है कॉन्फिडेंस की, जो उनके कप्तान देते हैं, डाउन टू अर्थ, क्या जबरदस्त आदमी है, बहुत ही पसंद है मुझे एडवर्ड्स, स्कॉट एडवर्ड्स। ही लुक्स लाइक टू मी द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन द वर्ल्ड कप, इस लिहाज से कि जो अपनी टीम को पोजेस करते हैं और उनको ओन करते हैं। तो उनमें एक एक नजर आता है, उनके अंदर एक बॉन्डिंग नजर आती है, हंसी मजाक चल रहा होता है, उनके मुंह पे स्माइल्स होती हैं। वैन बीक, मीकरन हो गए, इनके जो दूसरे खिलाड़ी हैं डिलीडा, तो इनका एक देखिएगा जेल कैसे करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो मैं इंजॉय करता हूँ, हंसी आती है मुझे, जब कैमरा जाता है बरेसी के ऊपर, जिन्होंने आज 41 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट बारी खेली। स्कॉट एडवर्ड्स की मैंने बता दूंगा आपको कि उन्होंने 68 रन बनाए, वो टॉप ऑफ द टेबल थे। छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बारेसी जिनकी मैं बात कर रहा था कि मुझे बड़ी हंसी आती है, आई लव सीइंग हिम। मैं उनको बताया था अपने 2-3 पिछले प्रोग्राम्स में कि एनालिस्ट नहीं है उनके पास, डाटा एनालिस्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो छोटे-छोटे कागज़ रखते हैं जमा करके, या बाहर से मंगवाते हैं, उन्होंने लिख के रखे होते हैं, वो अपनी जेब में रखते हैं। तो मैं हमेशा ये सोच के हँस रहा होता हूँ कि ये अगर पसीना वगैरह आता है, चूँकि पर्सपिरेशन होती है, इतने तो अगर ये कागज़ मिट गया तो क्या होगा? तो ये आप लोग मुझे बताएँगे कि ये कागज़ में से गायब हो गया तो क्या होगा? वो एक कागज़ निकालते हैं। जो ही टीम इकट्ठी होती है, ओवर चेंज होता है, फिर वो कागज निकालते हैं, वो पॉल एडवर्ड्स के पास स्कॉट एडवर्ड्स के पास जाते हैं, और फिर वैन बीक के पास जाते हैं। तो एक बड़ी अमांगी है। फिर वो बड़े सारे हिलाते हैं, सुनते हैं कि वो इतनी वो जो कागज देखते हैं, वो लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। बाकी तीनों सारे ला के सुनते हैं, फिर छोटी-सी बात करते हैं और फिर बिखर जाते हैं। और जब कैमरा उनकी तरफ जाता है, वही कागज़ फ़ोल्ड होता है, उसके 4 हिस्से होते हैं, वो वापस जेब में चले जाते हैं। फिर 2 ओवर शुरू होते हैं, बांग्लादेश की टीम स्कोर करती है, विकेट गिरता है, फिर कागज़ बाहर निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शकीब हो जाएँ या जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके, मेहदी हो जाएँ, उन सब की उन्होंने ड्रॉबैक जो चीज़ें इकट्ठी की होती हैं और वो लिख रहे होते हैं। एनीहाउ जी, स्कॉट एडवर्ड्स इंस्पिरेशनल लीडर एज़ अ बॉस, और बहुत जबरदस्त गेम देखने में आई। रजन जी, एनी वर्ड्स फॉर द नीदरलैंड्स? बहुत सारी याद ताज़ा करवा दी डॉक्टर साहब ने। मैं आपको अभी एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो नीदरलैंड जी ने जो तरीके से नीदरलैंड की टीम ने आज बांग्लादेश को, टेस्ट प्लेइंग नेशन को डाउन किया, they need absolute, not just congratulations, they deserve all the kudos, and I wish they can get into the top 8 and play the champions trophy next time. That is what they should deserve. Number, that was first of the point. Secondly, एडवर्ड्स की काफ़ी तारीफ हो रही है, एंड ही डिजर्व्स इट। ही इज अ ब्रिलियंट लीडर, scored not only 68, but Engelbrecht also made a vital contribution towards the end with a knock of 35, and similarly, Beresi, whom Dr. Saab mentioned, he also made 41. Now, all these small contributions also contribute to the team victory. While that is fully appreciated, but their bowling attack, they made the Bangladeshi much experienced batsmen dance to the tune and also restrict them. And it proved more than important
for their team to win. Once again, I reiterate, the time for their skipper, Bangladesh skipper, is already up and going. Now let him concentrate more on foreign leagues, make some good money, and enjoy his cricket rather than restricting a position of any young talented Bangladesh player or grooming a new captain. And one very interesting part which I would like to share. I am a great fan of Viv Richards, and I'll share one interesting information. Dr. Saab was very highly impressed that the Netherlands players took out paper and kept seeing their strategy. In our days, even school children used to do that to keep remembering everything. But but Vivian Richards was batting in Australia, and the great Ray Robinson, one of the all-time great writers of cricket, who once said Dennis Lilly's 5 wickets at Melbourne hot afternoon was worth 5 buckets of water in Sahara Desert. Similarly, he also made a statement when Vivian Richards got some 80 odd runs in Melbourne or elsewhere, I don't remember. After end of every over or two, he used to take out a small slip of paper from his back pocket and see what is the rate going on. And based on that rate, he used to time his innings. So if Viv Richards can do it about 30 years back, I'm really very happy that all your data analysis, database, and giving lakhs of rupees to these analysts, and what these analysts have done, all the good teams have lost. And here, the team with paper and pencil are creating havoc. Thank you, Dr. Saab. You reminded me that I had to pull out the socks and tell you that Viv Richards did it 30 years back. And today we are depending only on analysts. And Netherlands has proved a point there. All round, Netherlands Netherlands is a wonderful team, great team. And one last point I would like to mention to you. While I was the venue director in 2011 at Nagpur for the World Cup, Netherlands team and their manager Ed Van, who now supplies big materials, dressing room equipment, he was still a good friend of mine, and he used to tell me this team is bound to do something big in near 5 to 10 years, and they are an athletic nation, be it hockey, be it football, Richard Krajicek in tennis, and now they are establishing themselves in cricket. So let us hope and pray they prove everybody wrong once again, and they are a nation to be proud of, and they will continue to grow with the attitude they are showing. Thank you. जी जबरदस्त जी रजन जी विद योर मेमोरीज ऑफ विव रिचर्ड्स और आपने जो जमाने की बातें बताई आई लव टू लिसन टू यू। आपको मालूम है कि हम कितने घंटे गपशप करते रहते हैं ऐसी बातों पे। अच्छा, जाते जाते मैं एक और गुंगे ये डिस्कशन खत्म कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो गुरप्रीत जी से मैं लास्ट एक पूछूंगा। देखें गुरप्रीत जी 107 पे मुझे लगता है ये 5 आउट थे, और अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो ये एक और मैच है भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and Netherlands were also 5 down or against 6 South down Africa. Against South Africa also. against South Africa, yes 6 down। आप इनकी रिकवरी देखें। साउथ अफ्रीका तो चलो बांग्लादेश में कहता हूं कि चलो इतनी अच्छी निक में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अ टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और साउथ अफ्रीका की टीम तो मार धाड़ कर रही है, एक खौफ की फिजा कायम की हुई थी। इनकी रिकवरी चेक करें कि ये और कोई टीम होती तो कोलैप्स हो जाती। वो अगर इतने 95 पे 5 या 6, 105 पे तो 150, या बहुत हुआ तो 175 एट द मैक्स अगर आप सोच सकते हैं किसी एसोसिएट टीम से, तो वो 200 तक। लेकिन देखिए उन्होंने कितने यूजफुल रन्स लगाते हैं और बड़े बेखौफ तरीके से 255, 56, 265, 75 का टारगेट देते हैं, तो कितनी यूजफुल कंट्रीब्यूशन है देखें कोलैप्स होने के बाद। जी बिल्कुल, और बोथ टाइम्स देयर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसकी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अब बांग्लादेश की कुछ फील्डिंग भी आज ख़राब रही है, जो कैच छोड़े हैं वो भी उनको बहुत महंगे पड़े हैं। एंड लास्ट थिंग विच राजन जी ने बात करी है ना इनकी एथलेटिक नेशन की, तो मैं आपको एक और स्टैट बता देता हूँ कि पूरे मुल्क में
सिर्फ 6,000 लोग क्रिकेट खेलते हैं। सो पूरी कंट्री में सिर्फ 6,000 लोग हैं जो अलग अलग क्लब्स में, दोज आर रजिस्टर्ड, और उनमें से ये टीम बनी हुई है। अगर आप अपने हम इफ वी टॉक अबाउट कैनेडा लोकल, हमारे यहाँ पे ब्रैम्पटन GTA में ही 18,000 लोग जो है रजिस्टर्ड है। एंड फॉर अ नेशन विद ओनली 6,000 people interested in playing cricket, and for them to perform that good on world stage, it's a remarkable achievement. Hats off to Netherlands. जी, back to studio Hamza. Let's move towards our pre-match, which is tomorrow in Lucknow versus the defending champion England. And maybe I'm too early to say the new upcoming world champions in their home. We are halfway mark in the World Cup, and I think so. We're watching India becoming and getting closer to that shining trophy of the World Cup. So tomorrow, defending champion in England will be facing India in Lucknow. Um, to my understanding, the game on the paper should look much more in favor of India, but let's hear our analysts. On the papers everywhere, in the paper, out of the paper, India. Rajan ji. Okay, so you want me to take a call? Yes. I would put it India 60, 40 England. Now you will be wondering why I said 40 England. Never give up on a true champion. Never give up on a true champion. And they have proved. It is very sad, unfortunate that they are losing very heavily in India. But mark my words, both of you, the respective analysts, have always been saying one bad day for any team could prove disaster. Now, if this is going to be a knockout stage, those days of quarterfinal things is over. So I have a little, what to say, thought process which tells me that India needs to be a little more cautious, because the more the expectation, the more the pressure on them, and they are playing in home conditions. This subcontinent, whether it is India, Pakistan, Sri Lanka, there is a huge fan following, and the media pressure is phenomenal. So sometimes I am scared of my own people and their huge expectation and the media pressure, because even if you look at the media, I am not critical on that. If you look at the media 15, 20 years back, they used to have an opinion more neutral. Today, unfortunately, if you look at the media, they come as if they are coming there to support their home team. It is obvious. But if you look at the media 10 years back, I had the privilege and honor of sitting with some of the most eminent journalists, more than 50 or 100 journalists from across the world. And mind you, as a media manager of the Indian team, I also shared my views with very many people. And they always said that so and so media is very, very reasonable and they are very natural, normal. But today, if in the media box, it is very surprising to tell you that the media people representing one country and their batsman hits a six, he jumps in the media box. I can't understand. Why should you be so involved? What are you? You are a person carrying a news to your country. Are you a representative of that team? Indian media box or Pakistani journalist? You please watch and remember my points. And I'm watching cricket in the media box since the age of 10, because I was fortunate, blessed. And this is one point which was in my mind for many years. And I please suggest, request to my countrymen as well as some of the best teams. Please, please do not overestimate any team. It's a game of cricket. Did anybody expect New Zealand to lose against England last year in the final? Look at the way yesterday New Zealand lost. Look at the way New Zealand lost last time the World Cup. And what a glorious sportsman spirit was shown by the New Zealand team even yesterday and last year also. So my point is, India should not be complacent.
which hopefully Rahul Dravid with his experience will not allow. But England battling a bruised tournament should be a very dangerous proposition. One good inning from David Malan in the top of the order and something in the middle, things could go anywhere. And India, a couple of wickets at the top would bring some pressure on the batsman. And Adil Rashid is not an ordinary bowler. Don't underestimate him. He can always prove a point anywhere. You have seen he has helped England to win the World Cup. Am I right? So keep your fingers crossed. Don't overhype them. This is my fear. Thank you. That's true. I don't think anybody's overhyping, but yes, over expectations, because everybody expect, and the way team has performed, 5 wins in 5 matches, so that expectation bar has been raised. So everybody thinks now we are undefeatable. We will just win this World Cup. It is not going to happen that easy, and I am scared for tomorrow's game, if I may say, because now England is the most dangerous side. They have nothing to lose. They will be playing for their pride, and the world champions, defending champions, will not run away that easy. So tomorrow's game is very crucial for India as well. But I will not be unhappy if India loses tomorrow. That monkey will be off, and then we can say that okay, India has also lost one game, and semi-final will be much more easy to watch. And the second thing, India is the only team which has not conceded 300 runs in this tournament. And the reason is that because Jasprit Bumrah, the ever dependable Jasprit Bumrah, his run rate is only 2.90 or less than 3 in the first power play. So that is going in India's favor. And Kuldeep Yadav and Ravi Jadeja, nobody has been able to crack that code. Let's hope that जो इंग्लैंड की टीम है वो उनके अगेंस्ट अग्रेसिव प्ले करे. अगर वो अपने शैल में गए तो फिर डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगा ऑन पेपर, एंड गिवन द फॉर्म इंडिया इज अ फार बेटर एंड प्लेइंग टीम. But I suspect tomorrow the sun will rise on English side. So that's what I have to say. I'm saying 51-49 for England, just because I think they are a dangerous side and they need a victory. Thank you for Thank you for your word of caution, everyone, and keeping the Indian team humble. And as you said, Rahul Dravid, the sane man, the wall of India, will be there in the dressing room. And I think the players are mature enough to understand the job tomorrow and hope they will deliver according to it. Let's move towards the points table. As we see, South Africa has played six and on the first position with a loss, 10 points with the highest net run rate, which is 2.03. India played five, lost none, and won five, 10 points, but the net run rate is 1.3 only. New Zealand, six played, four wins, 8 points, 1.2. Australia, after beating even New Zealand today, have 8 points, but the net run rate is below New Zealand's 1.2, 0.97 only. That's why they're on the fourth position. Number five is Sri Lanka, 2-1, 4 points, negative 0.20 is their net run rate, and holding the fifth position. Pakistan, sixth position, 4 points, negative 0.3. Afghanistan is on the seventh and 4 points, and just below Pakistan, just because of their net run rate. It's not too far away, negative 0.96. Netherlands, after today's win, has improved their net run rate, the 4 points, negative 1.277. Bangladesh and England is on ninth and 10th position. England has the lowest net run rate, 1.63 as well. Also, in the end, I will thank all of my panelists. Sure. सोशल मीडिया पे हमारे टेलीविजन फोरम पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाट आर द पाकिस्तान चांसेस इन दिस वर्ल्ड कप. तो मैं 20 सेकंड्स में कंपाइल करना चाहता हूं कि द वेरी ब्लीक चांसेस ऑफ पाकिस्तान इन द लास्ट फोर. लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछना चाहती हैं कि चांसेस हैं कि नहीं है, तो उनसे मैंने वादा किया था कि मैं उनको अपने इस शो में बताऊंगा
कि there are any chances or not. Yes, there are still chances that Pakistan can make to the last four. कलकत्ता गेम तक पाकिस्तान के अभी हाथ में गेम है, लेकिन पाकिस्तान इज डिपेंडेबल ऑन अदर्स. तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मैं बताना चाहता हूं आपको कि पाकिस्तान का क्या है. पाकिस्तान हैव टू विन नेक्स्ट 3 गेम्स इन अ रो. तीनों गेमें हरानी होंगी और पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि न्यूजीलैंड अपनी अगली तीनों गेम्स हार जाए. पाकिस्तान तीनों जीते, न्यूजीलैंड तीनों हारे. पाकिस्तान नीड टू बीट बांग्लादेश, अफगानिस्तान और माफ कीजिएगा, पाकिस्तान नीड टू विन अगेंस्ट बांग्लादेश. लेकिन पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान की टीम, इनमें से कोई एक टीम श्रीलंका को शिकस्त दे दे. अगर वो श्रीलंका को शिकस्त देती है तो फिर ये पॉइंट्स इक्वल 10 हो जाएंगे. पाकिस्तान लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सी टीम हो जो श्रीलंका को शिकस्त दे, तो वो बांग्लादेश अगर हो तो वो पाकिस्तान के हक में ज्यादा अच्छा है. और पाकिस्तान विल प्रेफर कि श्रीलंका हो, बिकॉज श्रीलंका का नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान से नीचे आ जाएगा. न्यूजीलैंड का रन रेट सबसे अच्छा है और अगर उन्होंने एक भी मैच और जीत लिया तो न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. लेकिन अगर वो तीनों मैच हार जाती हैं जो तीनों तगड़ी टीमों के अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, जिनको उन्होंने आज तक नॉकआउट गेम में अंदर नहीं शिकस्त दी हुई और लास्ट 5 मुकाबलों में शिकस्त खाई हुई है, और श्रीलंका, दे विल फिनिश विथ 8 पॉइंट्स, दे वोंट क्वालिफाई डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान अगेन विन ऑल 3 गेम्स. तो ये सिनेरियो ऐसी है कि इसमें पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं. Happy that your heart still wants Pakistan to reach the semi-final. Why not? That is why I said media today has to understand the ground reality and not emotion. Absolutely, you have put up a beautiful point. Highly appreciate, but I can't myself. I will not be able to justify in such a manner if India would have been in Pakistan's side. I would have just said, thank you very much, you deserve to go, you go. But with this performance, I salute you for the optimism and the heart you are having for your side. Keep it up. Thank you. Thank you for the comments, Rajanji. That was a nok jhonk between Dr. Nan and Rajan, and absolutely loving it. And for our viewers who wanted to know if there are ifs and buts involved, so here are our ifs and buts for Pakistan. And closing the our program, thanking all of our panelists, Dr. Nan from Toronto, Gurpreet Prabha from Toronto, and Rajan Nayarji from Mumbai, India. Thank you very much for joining us. We will see you tomorrow after the game between India and England from Lucknow. See you tomorrow. Thank you very much. Keep watching N6 TV. Thank you.